Assalamu alaikum. Today we will talk about how to become a successful virtual assistant. So here are some good habits you should adopt regarding to your job as a virtual assistant. हर कोई तो बात करता है कि virtual assistant के लिए आपको ये steps follow करने हैं, ये ways follow करने हैं कि आप एक अच्छा virtual assistant बन सकते हैं. पर no one talks about the habits which a virtual assistant should develop in order to give his best. Here the question arises कि virtual assistant होता क्या है? Who is a virtual assistant? So इस एक ऐसा बंदा जो आपके पास आपके लिए काम करे और उसके बाद आपको एज अ पर्सन आपके डिफरेंट टास्क को मैनेज कर सकता है. वो आप कह सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सकता है. वो आपके डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करता है. आपके डिजिटल मार्केटिंग टास्क को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है. उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट अगर चाहिए किसी मीटिंग की, किसी चीज़ की, वो आपको प्रिपेयर करके दे सकता है. सो हियर आर द सम टास्क फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट. सो अब हम उन हैबिट्स की बात करेंगे जो एक वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर होनी चाहिए वाइल डूइंग हिज जॉब. सो द फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. आप कम्युनिकेशन स्किल्स क्या मतलब कि इसका ये इजी सा इतना है कि लाइक आप कम्युनिकेट कर सकते हो. आप दूसरे बंदे से इजीली अपनी बात समझा सकते हो और इसके लिए कॉमन लैंग्वेज क्या है? हम इंग्लिश. सो इंग्लिश में भी आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसको इजीली बात कर सकते हो, आप उसको अपनी बात समझा सकते हो. आपके ग्रिप इतनी अच्छी हो कि आप इजीली वो टास्क असाइन किया हुआ कंप्लीट कर सको. सो कम्युनिकेशन इज़ अ गोल्डन की टूवर्ड्स सक्सेस बिहाइंड वर्चुअल असिस्टेंट. कम्युनिकेशन के बाद हम सेकंड हैबिट की तरफ जाएंगे तो वो है सेल्फ मोटिवेशन. अपने आप को हर वक्त मोटिवेट रखना है कि आई हैव टू डू दिस टास्क एंड आई एम परफेक्ट टू डू दिस. सो अक्रॉस ऑल virtual assistant टास्क मोटिवेशन इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क. आपको अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं करना विद योर बिजनेस लाइफ. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी वेरी पंचुअल फॉर द थिंग्स यू हैव बीन असाइन टू कंप्लीट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम. सो सेल्फ मोटिवेशन क्या होगी कि आप हर वक्त अपने आप को मोटिवेट करें कि आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं. सो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल रिगार्डिंग दिस. सो फॉर ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस कि आप किस तरह इनको अवॉइड कर सकते हैं कि अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं. अपने टास्क जो आपको असाइन हुए हुए हैं उनको एक गोल सेट करें और उसके बाद उनको अपने सामने रखें कि यू हैव टू डू दिस इन दिस पर्टिकुलर टाइम. सो दिस विल हेल्प्स यू अलॉट फॉर द सेल्फ मोटिवेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यू हैव टू convey your whatever you are conveying is much confident for yourself as well as your business. फॉर द मीन वाइल इन दिस जॉब अगर आपको कोई ऐसा टास्क असाइन कर दिया जाता है कि जो आपने पहले नहीं किया हुआ कभी, सो यू हैव टू बी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि आप उसको किसी तरह सर्च करें. गूगल इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर यू ऑल. सो उसको कंप्लीट करें ये सोच कर कि इट्स अ न्यू थिंग, अ न्यू स्किल यू आर हैविंग. सो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट about ask questions and keep distractions to a minimum. आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू योर टास्क विच इज़ असाइन टू यू. आपने ये नहीं कहना कि यू आर नॉट perfect at this, how can you do this, I don't know this. You just ask the question to the person who is giving you the task that tell me how can I do this, how can I perform this particular task. So it will help you a lot. Then keep distraction to a minimum. This habit should be very much inside a person regarding to his job. So major distraction will be the noise at the background. So avoid this and be persistent towards your task. Now we will talk about keep yourself organized. ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म कि आपने ऐसी जगह पे अपना ऑफिस सेट करना है. यू मस्ट नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइज़ एंड अबाउट द अदर थिंग्स. अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है, अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना है. इट्स अ गुड हैबिट फॉर यू. सो बैकअप योर फाइल्स. No file is forever safe in the cloud. No matter what anyone tells you, always back up your files. Is the best habit you can develop during a virtual assistant. Whenever the person says that give this file to me or give this explanation to me, you have the backup file and you can easily give the results to hand over the results to the person.
So these all were the habits, good habits you should develop. So thank you for listening, and if you like the video, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you.